So guys, here we are going to start 2019's computer applications paper. So as you know that your paper is divided into two part, that is section A and section B. Section A, you don't have any choice. That means all the questions you have to attempt. That is mandatory for you. But in section B, there are total 6 questions, and out of 6, you can attempt there any of the 4. That means the question where you are finding that little bit difficulty, so that you can leave simply. Okay, and here 4 question you have to attempt, means choice is given to you in the B section, right? So if I talk about the marks, as you know that it is 40 marks. Section A is 40 marks, it is 60 marks, so total 100 marks paper will be there. Okay, so in this video, in this lecture, I will explain only the part A, that means the approach for 40 marks, right? So you have to attempt all the questions, it is given there. So all the questions, if I'm showing you, these questions are 2 marks only, right? All the questions we are having there only 2 marks. So very simple questions are there basically, right? So here also we will do this practically also, and I will show you through the PPT also. So these questions are there, right? I'm just showing you first of all how the paper is coming. So this is the question number 2, right? Here the differentiate is coming. So you can see here so many questions from the differentiation it came. Like we have there the first differentiation between unary and binary. Second is there, that is if else if and the switch case. Next we have there the linear and the binary search. Okay, so all these questions are coming, means differentiate questions are means these question came so much, right? You can say that total 6 marks differentiate questions came, right? So question number 3, as we know that the Java's expression, this is coming every year. Next we have this, okay, the starts with and the random function, that is from the maths module, and this is the string function, right? So output based question, here you have to convert it into the ternary into the if. Okay, no, here if the value of basic is 1500, so what will be the value of text? Okay, so you have to tell the value of text. So that is so much simple question came, right? So like that the questions came. So we will do all the questions, right, one by one. See, one more question is there, I found the differentiate question. So the call by value and call by reference, right? So total you can say that 8 marks that came from differentiation. Wow, it's a wonderful, huh? That means the paper is really so much easy, huh? So all this question, let's do this practically. So for 60 marks, that means for the section B, we will do discuss it later, right? So jumping to the PPT. So our first question, that is name any 2 basic principles of object-oriented programming, right? So the basic principles of object-oriented programming. We have their encapsulation, we have inheritance, we have class, we have object, we have their data abstraction, we have their polymorphism. So any of them you can write there, right? So any of them you can write. So this question is really very easy, you can say that, right? So next we are having there the unary operator and the binary operators difference. As you know that the unary means for the single operand, and it is for the 2 operand, right? So we can say that in unary operator we are using increment or decrement, like prefix, postfix. Have you seen maybe x plus 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 x, x minus minus, or minus minus x, right? So these all are there in the unary operators. One more operator that work with 3 operand, that is the ternary operators, right? So this is binary operator, right? Binary operator, let's say x plus y. Okay, so x is greater than y, fine. So these are called the binary operators there, right? Next, the question
is name the keyword which, so only one word answer is there. Okay, so the indicates that a method has no return type. So as you know that when any method, any function is not returning anything, so that particular function is void, right? So you have to write void like that only, means no need to write V capital. Always this is in our habit that the first letter we are writing in the capital, so don't write, right? So this is the void. Void is a keyword, so static keyword that we are using for the class variable, right? So for the class variable we are using the static keyword. Okay, so static variables which are inside the class but outside the function. Okay, inside the class but outside the function, and they are having there the keyword that will be there, the static keyword, right? So those are called the class variables. Okay, so the method which are inside the function, those are called always the local variables, right? Moving next, that is, so this question is related to the data type, right? So data types here, data is write the memory capacity storage size of short and float, right? So you have to learn all these things, that the memory capacity for short, for int, for long, double, char, right? So here as we know that it is taking 2 bytes. Okay, so 2 bytes, 8 multiplied 2, that means 16 bits. 4 multiply 8, that is 32 bits. Okay, so this all are the question, very very easy. Public, that keyword we are using when, the public keyword that we are using when we know that our method, our function, that is to time. So public is a keyword, right? So that we are using in front of the function, then public means that particular function is accessed everywhere. And next we have there a, so as we know that it is character, right? It's a character, we can say that character constant. Next we have there the double equals to, it is called the relational operator. This is what the relational operator, right? That is doing the comparison between two variables value. Next we have there the separator. Okay, so separator, this is curly brackets. So these questions are very easy. Next we have the comparison. So comparison, if else if and the switch case, so we have to compare it between both. So one thing that you have to remember here, it is not written, but always the differentiate question must be example included there, right? So give one example also for the switch case and for the if else. So the main thing is there here, not only you can use integer character, even in the new latest version we can use the string also when we are checking the condition, means double quote also allowed, that means string, double quote means string. But here integer, character, float, boolean, anything, right? So this is about that, right? So next, give the example of that. Give one example when we are using if else if and the switch case, right? So next we are moving to the question. This is the question, that is string p is equals to 20. So this is what, this is the string, right? And this is also our string. Here we are using the parse and the value of, so the work of both is similar. That means here the string is there, that is 20 is there, this is the string. So now here we are just converting it into the integer with the help of our wrapper class. Okay, so this is our wrapper class here. So you have given integer a, that means whatever is inside this parameter that you are going to be convert into the integer 20, right? So next we have value of, q is there, so q is having 19, that is the string value. We are just converting it into the integer, right? So integer b, right? So this string and this string both is converted into the integer. Next you are just printing that, very simple.
This you have done in the buffered reader, right? So this also you have done, right? So value of and the %. So as you know that in Java, we have there the three type of error. So the compilation type of error, that means the lack of programming knowledge. Sometime you are skipping semicolon, dot, bracket, right? So system like S is a small, you are writing. So these type of errors that are coming at the time of compilation. But the runtime error, let's say you have divided something with 0. So 0, that is the runtime error, right? So let's say you have given arrays out of bound, right? Array size was 5 and you are taking variable that is what, the 7 number. So the 7 number element is not present there in the array, so that time it will create a runtime error. Okay, so the runtime error. Then the logic error, that means you have done the mistake in the logic. Okay, so let's say I have given PRT for the SI, but you don't know the formula for that. You have given there the wrong formula, plus you have put there maybe, okay, I told you to do x plus y, but by mistake you have done x plus x multiply y. So this means you made the mistake in logic. That is not find by your computer. Your machine is not finding this logical error, that you have to find it, right? And this runtime and the compilation error, that is found by your machine. Machine means by the computer. Logical error, that is not found by the machine, that you are finding because you are doing mistake in the logic. 9, right? So res character dot is digit. So what we are going to do, we are just finding that particular is a digit or not. See guys, here is given. What is given is, so its answer will be a boolean, means either true or false. I'm repeating it again for you, character ch9, because single quote is given there na. If let's say x and I'm writing 1 और इसको मैंने बना दिया what, char. So now this is 1, this is character now. So we are checking that what is inside this is digit function, is that character or digit. This is my wrapper class. So yes, this is the digit. So is digit function, that is giving you reply what, true, means the data type is what, of course boolean. And one more thing, when you are writing true, so please write true. अब बोलोगे मैम स्पेलिंग सिखा रहे हो, नहीं, t must be small there, because Java is having this keyword and this is small t. And booleans b, this is not acceptable. This also, this you have to write, right, b, right? So next we have there the differentiate between linear search and the binary search. So if you know the technique, easily you can write the difference. Okay, so in this question no need to give the example there, because we know that these programs are very bigger, right? So the difference is there. Okay, so write the difference. So what we are doing with the linear search, if you are asking that linear search means sequential search, ये एक तरीके से बस हो गई, क्या हो गए, बस हो गए, राइट? सो बस के अंदर मैं पहले वाले को एलिमेंट को चेक करूंगी की के साथ में, राइट? फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, टिल अनटिल वी आर नॉट रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. सो एक एक करके हम उसको सर्च करेंगे, जैसे मिलेंगे ब्रेक लगा के बाहर आ जाएंगे. और वहीं पर जब मैं बाइनरी के साथ में करूंगी, सो इन दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एरे है दैट मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी में भी होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग में. फिर आप क्या करोगे, पूरे के पूरे एरे को डिवाइड कर दोगे हाफ पार्ट में, राइट? सो अब उस पर्टिकुलर की से जो भी बीच में मिडल में आया उसको मैच करोगे, ठीक है? उसको मैच किया, अगर वो उसके साथ मैच करता हुआ तो बहुत अच्छी बात है. अच्छी बात मतलब हमें मिल गया अपना एलिमेंट. लेकिन अगर वो उससे छोटा हुआ और ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारा जो सर्च होगा वो इस तरफ होगा, अदरवाइज इस तरफ होगा. फिर अगर इस तरफ हुआ तो हम इसमें से अब सर्च करेंगे, मतलब इतना पोर्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब इधर वाले पोर्शन में, तो इधर वाले को डिवाइड करोगे, अब इसके साथ मैच कर गया तो मैचिंग हो गया, नहीं तो इधर भी हम चेक करेंगे कि लेफ्ट में छोटे आने चाहिए, इधर में बड़े आने चाहिए, राइट? ओके, सो इसको एक बार देख लेते हैं. हाँ, लीनियर सर्च वर्क्स बोथ फॉर सॉर्टेड अनसॉर्टेड. यस, लीनियर सर्च के लिए आप, क्योंकि आप सिंगल सिंगल एलिमेंट को पकड़ के देख रहे हो ना, मैच कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है. सो फॉर दैट
सर्च अगर आपका सॉर्ट है नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हेयर इट इज मैंडेटरी दैट द सॉर्टिंग होना चाहिए, तुम्हारा एरे सॉर्ट होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग बिगनिंग से स्टार्टिंग से हम लोग है जो सर्च करना स्टार्ट करते हैं, बट हेयर हम लोग उसको हाफ 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने इधर जाना है कि इधर जाना है, राइट? ठीक है, सो दिस यू कैन राइट इन द बाइनरी सर्च एंड इन द लीनियर सर्च, दिस वी हैव टू राइट। सो मेरे को देखते से पता चल गया दिस इज द एब्सोल्यूट साइन, राइट? तो एबीएस फंक्शन यूज होगा बाहर, तो अंदर क्या होगा गाइज, x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, सो दैट इज वेरी इजी, राइट? मतलब पेपर बहुत ही ईजी आ रखा है। Okay, so next we have to write the return type of those. Starts with function, of course ये मेरा string का function है, ठीक है? So the data type starts with कि हाँ ये उससे start हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो of course ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सो मेरे पास में बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आएगा। सो यू हैव टू राइट ओनली डेटा टाइप ऑफ दोस। सो ये जो स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं इसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपको डेटा टाइप पता होना चाहिए, आपको रिटर्न टाइप पता होना चाहिए, मतलब रिटर्न टाइप का डेटा टाइप पता होना चाहिए और क्या रिटर्न करेगा, दिस ऑल्सो, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव देयर द रेंडम। रेंडम ऑफकोर्स आपको डबल में वैल्यू है जो रिटर्न करेगा, ठीक है? रेंडमली मतलब इट इज गिविंग द वैल्यू बिटवीन 0 to 1, तो दो इनके बीच की वैल्यू रेंडम के थ्रू आती है, राइट? सो मैथ्स का ये मेरा फंक्शन है। नाउ हेयर इफ द वैल्यू बेसिक की वैल्यू इतनी है, what will be the value of text after the following statement is executed? So इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है जो पूछी गई है। अरे बेसिक की वैल्यू क्या ज़्यादा है 1200 से? यस, ज़्यादा है क्योंकि ये 1500 है। सो ऑफ कोर्स ये सेक्शन आपका ट्रू हुआ, तो ट्रू होते ही आप लोग इस पार्ट को है जो रन करने वाले हो, दैट विल बी 200, राइट? अगर गलत होता तो 100 आंसर होता, right? So this is the value of text. So now in this question you have to tell the output, right? So give the output of the following. So here integer I, so I is equals to 5, 5 क्या बड़ा है या इक्वल है 1 के? So of course ये बड़ा है, इक्वल तो नहीं है। So हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 5 क्या इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। सो ऑफ कोर्स हमारे पास में रिमाइंडर इज कमिंग 1, तो 1 आया, सो कंटिन्यू करो, यानी कि i माइनस माइनस ये हुआ 4। सो 4 इज ग्रेटर देन, यस, यहाँ पर हमारी कंडीशन है जो फॉल्स होगी, फॉल्स हुई तो अब आप प्रिंट कराओगे i, दैट मीन्स 4 प्रिंट हो जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट i विल बी 3, कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू और हम रिटर्न हुए, यानी कि कंटिन्यू किया हमने। फिर i की वैल्यू माइनस माइनस और ये हो जाएगी 2, 2 होते ही हमने कंडीशन चेक किया, यस इट इज ग्रेटर देन, तो अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है क्योंकि रिमाइंडर इज कमिंग 0, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? मेन चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी वो ये कि आपका आउटपुट ऐसे आएगा, ना कि ऐसे आने वाला है, राइट? सो इट इज आस्किंग हाउ मेनी टाइम योर लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। सो गाइज टोटल 5 टाइम, बिकॉज 5 से लेकर के 1 चल रहा है और 1 इज इक्वल्स, तो 4 लिखने की गलती मत करना, ठीक है? तो अब फिर क्या होगा, i माइनस माइनस 1 हो जाएगा, 1 होते ही ये इक्वल है, हाँ जी ट्रू है, तो अब यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू, 0 होते ही आप लूप से बाहर आ जाओगे, right? So this is how working, right? So next we have there the question 3, that is state the difference between call by value and call by reference. So ये क्वेश्चन आपका, आप कह लो कि ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल दूसरे तीसरे बार पूछा जाता ही जाता है, right? So कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। सो गाइस कॉल बाय वैल्यू मतलब जहाँ पर आपके जो पैरामीटर्स है उसकी कॉपी जाती है, मतलब ओरिजिनल के अंदर कोई चेंज है जो नहीं होता है, राइट? सो कॉल बाय वैल्यू द मेथड, कॉल बाय वैल्यू द मेथड क्रिएट्स इट्स न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स, यानी इसका जो आपको मतलब इसके ऊपर जो मैंने लेक्चर डाल रखा है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए, बट आपको लिखना कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट दैट आई एम टेलिंग यू हियर। We have there the call by value. In call by value the method create its new set of variable, right? So formal parameter हो गए,
तो मतलब दो टाइप से पैरामीटर होते हैं ना, एक तो जब आप कॉल करते हो तो वो पैरामीटर आपके ओरिजिनल होते हैं, और जो आपकी फंक्शन डेफिनेशन में रिसीव करते हैं वो होते हैं आपके फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ से वैल्यू जब यहाँ भेजते हो तो जब यहाँ वाले में कोई चेंज नहीं आता, कब? जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हो। ठीक है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के टाइम पर दोनों जगह पर ओरिजिनल और यहाँ पर जो भी फंक्शन की डेफिनेशन है वहाँ पर चेंज है जो होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आई थिंक 2 लेक्चर्स हैं जो डाल रखे हैं, तो आप प्लीज़ उनको प्रेफर कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो मैं आई बटन के ऊपर भी इसका जो लेक्चर है वो डाल दूंगी, तो आप उसको प्रेफर करें अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है। ठीक है, ओके। सो प्रिमिटिव, अगर मैं इसको पढ़ूं इसकी डेफिनेशन, इन द केस कॉल बाय वैल्यू द मेथड क्रिएट इट्स न्यू सेट ऑफ वेरिएबल टू कॉपी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर एंड वर्क्स विद देम। बट यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपके पास में एक्चुअल पैरामीटर है जो पास होंगे और चेंज भी उन्हीं में होगा। ठीक है, कोई कॉपी नहीं बनती है यहाँ पर। ठीक है, सो एनी चेंज मेड इन द फॉर्मल पैरामीटर नॉट रिफ्लेक्टेड, ऑफ कोर्स उसकी कॉपी जाएगी। अब आपने फोटो कॉपी लेकर के गए कहीं और आपकी ओरिजिनल कॉपी घर पर पड़ी है मार्कशीट की, खराब होगी तो ये होगी ना, ये थोड़ी होगी, ये तो सही रहेगी घर पर। बट यहाँ पर क्या होगा, जो चेंज फॉर्मल में हुआ वही एक्चुअल में हो जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप आर पास्ड बाय वैल्यू, और यहाँ इसीलिए इसको, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, एरेज हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट हो गए, यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। तो इसीलिए ये जो चेंज आता है ओरिजिनल में आ जाता है, मतलब ये एड्रेस के ऊपर काम करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स एड्रेस, राइट? तो चलिए अब आगे मूव करते हैं, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग, give the output of the following maths.sqrt। ठीक है, sqrt you have to find। तो मेन चीज यहाँ पर क्या है कि रिटर्न टाइप यू हैव टू रिमेंबर maths.max। अब इन दोनों में से वैल्यू आती है 16, बट sqrt ये आपको स्क्वायर रूट निकाल के देगा, आप लोग गलती करोगे लिखने की 4 इज नॉट द आंसर गाइस, 4.0 आपका आंसर है, ना कि 4 आपका आंसर है। Okay, so next we are going to do write the output of the following। so string मैंने लिखा phoenix, then आपके पास में इसमें क्या है, आइसलैंड आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग, मतलब सब स्ट्रिंग आप कह लो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें से चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली हैं। आप यहाँ पर देखो कॉन्कैट s2 सब स्ट्रिंग 2। तो अब हम कर क्या रहे हैं, पहले ऑफ कोर्स ये वाला पोर्शन है जो आपका सॉल्व होने वाला है, s2 डॉट सब स्ट्रिंग 2। अब इसमें हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि आपके पास में s2 कौन है, ये है। ठीक है, तो s2 में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5, कुछ ऐसा है। तो अब आपने क्या किया, सब स्ट्रिंग 2, तो मेरा 2 नंबर एलिमेंट कहाँ है, कुछ यहाँ पर है L के ऊपर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से, मतलब जो सब स्ट्रिंग किया है वो यहाँ से, ठीक है, एक सब स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग का ही दूसरा पार्ट, मतलब उसी के अंदर का पार्ट, कुछ स्ट्रिंग इतनी है उसी का ही कुछ पार्ट। ओके, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको कनकैट कर रही हूँ, किसके साथ में, s1 सब स्ट्रिंग 0। तो s1 के अंदर 0, यानी कि 0 मेरे पास में क्या है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी। ओके, सो यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो मैं इसको कनकैट कर रही हूँ, तो आपका कुछ बनेगा इस तरीके से, फियोनिक्स लैंड, ऑफ कोर्स LAND, यानी कि 2 नंबर से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, राइट? सो फियोनिक्स लैंड। सो आगे वाला क्वेश्चन देखो, अपर केस में यार आपको कन्वर्ट करना है, तो आइसलैंड ऐसे है जो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी हो सके स्ट्रिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मारो। नेक्स्ट वी हैव दिस, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे होते हैं, x प्लस माइनस माइनस जेड। मैं इसका भी आपको आई बॉक्स पे है जो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, मैंने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस है जो करा रखी है। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, x प्लस माइनस माइनस जेड प्लस वाई प्लस 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 वाई, राइट? So x is 2, y is 3, z is 1. So now we know that what is x, that is 2 plus minus minus. Okay, so what minus minus, z, that means 0. Okay, because it is prefix, so first the decrement will be done, then plus
y means 3. Now 3, that means y is not 3 now. Now it is 4. So plus 4, right? So now solve this. It is coming 9. So this is the answer of that. Okay, so moving to the next question, that is, give the output of the following statement. So you have to give the output of all these statement here. Artificial intelligence, IoT, machine learning, big data, that is given in the string, right? So in this string you have there 0 1 2 3. So guys, it is asking कि इस ट्रेन के डब्बे के थर्ड नंबर पर कौन बैठा है, बिग डेटा, right? So then it is asking the length. ओके, सो लेंथ क्या है एक्स की, बिकॉज इट इज स्ट्रिंग एरे. सो गाइज कितने इस ट्रेन के अंदर 4 जने बैठे, तो 4 इज द लेंथ, राइट? नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय अ पैकेज? Give an example. So guys, package in Java is a mechanism to encapsulate a group of classes, sub packages and interfaces. Interface आपके syllabus में नहीं है. Examples, lang package हो गया, util package हो गया. You have used actually, like if I'm showing you in the blue j, so you have done there, you have imported their util package, io package, right? Because when you are doing work with scanner class, so you are importing there the package. um, it is not there, yeah, let me show you in another one. Yeah, of course there, yeah, this is this, see there, that is what, that is our util package. Why I am importing this package? Because this scanner class is inside this, so without that we cannot use that. Suppose I am writing there io, so that means now it will show an error to me. Why? Because I have imported their IO package. So I have to import its package also. And in a same class, we can import more than one packages also. Let's say I can give their IO also, right? So more than one packages also I can create. And in Java, can we create our own packages also? Yeah, of course we can create. If you talk about BlueJ, so here this is the option, new package. So through that you can create the new package. So inside the package, so there is the classes, right? So inside the package we can say that, hmm, yeah, jumping back to the PPT. So inside the package we have a classes, we can create there the subclass or sub packages also, interfaces also, like, okay. So these all are the examples. So this was all about the question paper of 2019, right? So that was the section A. Guys, we will be discussing section B soon. Bye bye.